Hi, hello to welcome all of you. Myself Chandrakant Power and this is my channel Power of Math. Now we are moving toward the part 4 of our topic, that is number system 6 standard Cambridge Math. अब तक हमने 1.1 से लेकर 1.4 तक देखा. 1.1 exercise, 1.2 exercise also solved, and now the remaining part of this topic is international place value system. How the international place value system is different from the Indian place value system, वो हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं. तो इंडियन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, जस्ट दिस चार्ट इज ऑलरेडी इन गिवन टू योर टेक्स्ट बुक also, but I am just draw here for your better understanding. Just look here. Here international place value system, we see that three column, ones, thousands and the millions. Okay, 1000 and the million. In ones column we can see that there is a 1, 10 and 100 places there. Okay, one place, 10 and 100. In a thousands column we see there is a three column. Okay, there is a three sub columns are there, and that will be 1000, 10,000 and the 100,000. These three column come in the thousands column, and now the millions column. In millions column again, then millions column divided into sub three columns. In that million, 10 million and the 100 million. Okay, according to their column the numbers are also given there: 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, million. Yeah, it's a 1 million, 10 million and the 100 million. The numbers also is given there: 1 digit, 2 digit, 3 digit, 4, 5, 6, 7, 8 and the 9 digit number is also there. This system also is just like our Indian place value system, but there is a little bit of difference. Okay, Indian place value system में क्या differences होता है वो हम यहाँ से देखेंगे. देखो, international place value system is slightly different from the Indian place system. Okay, the international place system is slightly different from the Indian place system. Indian place system में क्या होता है? Okay, in the Indian system the numbers are grouped using the commas from the right side into the ones group of 3 digit. जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के नंबर स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द कॉर्नर एंड दे आर वंस ग्रुप ऑफ द 3 डिजिट. ओके, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में भी वैसे होता है कि नंबर आर स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड एंड दे आर आल्सो डिवाइडेड इनटू फर्स्ट 3 ग्रुप्स. ओके, पहले के ग्रुप में 3 डिजिट होते हैं, दैट इज 1, 10 एंड 100. ये 1 एंड द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम दोनों सेम है, बट व्हाट इज द डिफरेंस? ओके, वहां पर होता है 1000 ग्रुप ऑफ 2 डिजिट. इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में जो 1000 का ग्रुप होता है वहां पर सिर्फ दो ही नंबर्स हमें देखने को मिलते हैं, दैट विल बी 1000 and the 10,000. Only 100,000 place is missing in Indian place value system, but in a international place value system there is a 100,000. This place is created, and this is the different from the Indian place value system. Again, the lakh group of 2 digit. Indian place value system में हमें क्या मिलता है? lakh groups of 2 digit and the crore group of 3 digit. अगर मैं आपको नंबर के साथ एक्सप्लेन करना चाहूंगा तो देखो यहाँ पर मैं नंबर लिखूंगा 829 8272 and this is 69. Just look carefully. Okay, Indian place value system में हम नंबर्स कैसे डिवाइड करते हैं? फर्स्ट राइट साइड 3 ग्रुप्स, देन 2 2 2. तो सबसे पहले हम एक ही नंबर का जो पहला वाला ग्रुप होता है उसको हम 3 के डिजिट में डिवाइड करते हैं, आफ्टर दैट 2 2 के ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, दैट विल बी वंस, 1000, lakh and the crore. इस तरीके से हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में नंबर डिवाइड करते हैं, बट इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम 3 3 के कॉलम करते हैं. ओके, वी आर मेकिंग द 3 3 कॉलम्स ऑफ अ नंबर्स. सो देखो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, दैट इज इन इंटरनेशनल सिस्टम द नंबर्स आर ग्रुप इनटू 3 फ्रॉम द राइट साइड. ओके, नंबर्स आर फ्रॉम इन द 3 फॉर्म इन द राइट साइड. 3 3 के कॉलम में नंबर्स फॉर्म होते हैं, एंड दैट इज नेमली वंस, जैसे कि यहाँ पर लिखा है वंस, thousands and the million. ओके, 1000 and million, और इनके सब ग्रुप्स पढ़ते हैं. जैसे कि 1, 10, 100 आते हैं वंस में, 1000, 10,000, 100,000 आता है thousands में, and the million, 10 million and 100 million that comes in a millions group. तो अगर मैं इसको नंबर के साथ आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 8 2 3 5 6 7 1 2 3. ओके, 3 3 के कॉलम में नंबर्स फॉर्म होते हैं, ones, thousands and the millions. Okay, there is a little bit of different in the Indian place value system. So this is so much important. Now you make just habit to use the international place value system, because we also deal with in a international level. अगर हम वहां पर जाते तो आपको करोड़, लाख ये नंबर्स मिलते नहीं, आपको वहां पर मिलेंगे वहां पर
100,000, million, 10 million, 100 million. This number you can heard in a very so many times in the news also. Okay, this company has make a turnover of 100,000. Okay, 100,000 is there. That company making a turnover of 10 million. एक हमारे यहाँ पर बहुत सारे अरबपति मिले या ओके दैट द मिलेनियर्स पर्सन आर देयर, मिलेनियर, बिलियनियर. सो ये जो टर्म आती है कहाँ से आती है? ये आती है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम से आते हैं. और इनमें जो नंबर हम करते हैं वो भी बहुत इजी होते हैं. वहां पर कुछ और चेंजेस होते हैं जो मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा. देखो, जो 10,000 तक या हमारे यहाँ पर उनके यहाँ पर सेम होता है, बट हमारे यहाँ पर जो लैख स्टार्ट होता है उसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में बोलते हैं 100,000. मतलब हम 1 लाख बोलेंगे तो वो बोलेंगे 100,000. अगर हम 2 लाख बोलते हैं तो वो बोलेंगे 200,000 इज दैट. ओनली द डिफरेंस इज दैट. ओके, जब हम आगे बढ़ते हैं हमारे यहाँ पर होता है 10 लाख. इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम क्या देखते हैं? इंटरनेशनल इंडियन प्लेस वैल्यू में 10 लाख, और इंटरनेशनल में हम यूज करेंगे विच इज व्हाट इज द टर्म? मिलियन इज देयर. अगर हम वी हैव 10 लाख रुपीस तो इंटरनेशनल लेवल पर हम कैसे बोलेंगे उसको? वी हैव 1 मिलियन रुपीस. ओके, वी हैव 1 मिलियन रुपीस. हमारे यहाँ मतलब इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम देयर इज 10 लाख, बट इन इंटरनेशनल लेवल दैट इज 1 मिलियन. ओके, हम यूज करेंगे टर्म करोड़. इन इंटरनेशनल लेवल दे यूजिंग द टर्म 10 मिलियन. व्हाट इज दैट? प्लेस वैल्यू सिस्टम में होगा 1 करोड़. तो वही टर्म वी कैन यूज इन इंटरनेशनल लेवल दैट इज 10 मिलियन. सो हमारे यहाँ पर होता है 10 करोड़. इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में होगा 10 करोड़. तो दैट इज द टर्म. ओके, 10 करोड़ इज देयर. तो यहाँ पर जो 10 करोड़ है तो हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में उसको काउंट करेंगे 100 मिलियन इज देयर. 100 मिलियन इज देयर. ओनली द very short difference is there, and I hope you are very good students, so you can easily catch this system. That will be 100,000, million, 10 million, and the 100 million, that is equal to 100 million is equal to 10 crore, 10 million is equal to 1 crore, 1 million is equal to 10 lakh, and the 100,000 is equal to lakh is there. In the same way, I have not rubbed this chart. This chart is so much helpful to our next example also. We saw exercise 1.3 also here. Now, if we understood this chart in better way, so we can go through the example. The example is here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This number represent the number in both the international and Indian place value system. ये जो number है हमें, we can present this number in a two ways. First, we can present in a international way, and then in a Indian place value system is given there. So first we go through the Indian place value system. जो हमें पता है, we can represent this number in Indian place value system. So this number, first what will we do? We make a groups. Okay, groups from the right side 3, 2, 2, 2. Okay, so I am writing this number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now the right side of the corner 3, 2, 2. So according to the Indian place value system, ones, thousand, lakh, and the crore is there. And now we read the number. Okay, this number is 12 crore 34 lakh 56,789. According to the Indian place value system, we read the number 12 crore 34 lakh 56,789 is the number according to the Indian place value system. Now the same number, if we want to represent in an international number system, we can make a group of 3, 3 from the right side of the corner, and the 3 groups is 1, 1000, and million. So first we write down the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and now making a groups of 3, 3, 3, and these 3. So here we have ones, 1000, and million. And now when we read the number, how we read the number? Okay, 123 million 456,789 is the number is there. According to the international place value system, we read the number 123 million 456,789. That's the number 789. If you want to write down the number, you can write down also 123 millions, 23 millions, comma is there, so I am inserting the comma, million. So millions का yes यहाँ पर लगाना होगा, millions. After that 456,000. This term you can make sure is very
important. These terms you can don't forget. When you read the number, you can using it. First number read karo and then add these numbers and these words are there. 133 million. After that 456,000. 456,000 and comma is there, and after that the remaining part of the number 789. 789. Now this is the difference is there. I hope you can better understand what this number system is according to the Indian place value system. Crore, lakh, thousand and the remaining part, and the international level पे million, thousand and the ones is there. Okay, 123,456,789 according to the international place value system. I am writing this number also. I hope you understand. Now moves toward the next question of 1.3. Okay, we solve the exercise 1.3 in a very short way because I am solve here only few examples and remaining examples you solve in your notebooks. Toward the exercise 1.3, in the first question is that I am read the first question. What is the smallest 8-digit number in the international place value system? Write the number in both digits and word. Okay, according to this smallest 8-digit number. तो आप सबको पता है smallest 8-digit number कौन सा है? Yeah, and write down here. Now in digits also, and we can write down in words also, that is 10 million. The number is 10 million. This is the first question answer. इसी तरफ हम जाएंगे. Second question है, what is the largest 8-digit number in the international place value system? Largest 8-digit number according to the international place value system. Write the number in both digits and words. Okay, write the digits and words. So 8-digit number हमारा आता है 8-digit. Okay, this one is the 8-digit number. So according to this 10 million के कॉलम में हमारे नंबर आएंगे. तो हमें पता है कौन सा नंबर है वो 1 2. यहाँ पर हमने नंबर्स की डिस्ट्रीब्यूशन करके रखी है 3 3 के कॉलम में. सो ये हो गया हमारा लार्जेस्ट. सो नंबर इज राइटिंग हियर. सो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड राइट डाउन दिस नंबर इन वर्ड्स आल्सो. दैट इज 99 millions. Insert the comma. 999,000. 999,000 999 is there. 999 according to the international place value system. So next question यहाँ पर आएगा, what is the smallest 9-digit number? जो हमें सबको पता है smallest 9-digit number that will be our 10 crore, and according to the international place value system that is 100 million is there. So 100 million हम यहाँ पर लिखेंगे. मेक श्योर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में नंबर्स कैसे फॉर्म होते हैं? फ्रॉम द राइट साइड 3 3 के ग्रुप में फॉर्म्स होते हैं और उसको हम लिख सकते हैं. तो दैट आंसर इज 100 मिलियन. 100 मिलियन. नाउ नंबर 4th क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट 9-digit नंबर एंड प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम इन डिजिट आल्सो एंड वर्ड्स आल्सो. सो नंबर इज दैट if we read the number according to the Indian place value system, that will be 99 crore 99 lakh 99,999. but what is the difference in international level? International level में हम इसको 3 3 के फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं and we read the number 999,999,999. okay, that's the number. So you can write down. I am not writing it here. 900 and I am again repeat how to read the number. 999 million first group, 999,000 second group, 999 is the last one. Now moving toward the next question. Question 5, represent the number. What is
Question 5. Fill the boxes in the table appropriately. Fill the boxes in the table appropriately. The numbers are given there, and this type of boxes is given there. 100 million, 10 million, million, 100,000, 10,000, 1,000, 100, 10, and the one, and you just represent the number according to their place value. Now question 6. Insert the comma and write the given number in words according to the international number system. Okay, question 6 से हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन you solve it. Okay, the question 6 is there. The number is given here according to the international place value system. You just insert the comma and write the numbers in words form. So first we write down the number and separate it according to the international place value system. So number is there 946 comma 194 comma and 711. So this number, first we read the number and then write down in words. Okay, 946,194,711. So according to the international place value system, we write down here 946 million 946 millions 194,711. So simple is that. Now the second number is given here. That number will again, this number presented according to the international place value system. Just first make a 3 forms. 3 groups are there. So I am writing here 520 175 and 829. जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि I am just making already the comma is here, these 3 numbers, then again this after before these 3 number. Now we are insert the comma. Okay, and now read the number 520,175,829. First you read it and then after that write down the number, because when you make sure and very clear, if you read properly then you can write down also properly. So I am writing it the number 520 millions comma 175,000. Just look at the columns. That's why I am not rub the columns. Okay, no, columns are important. 175,000 and the last 800. 829 is there. So this part is also important, students. I hope you could better understand. Some remaining question you write down in your notebook and do the practice how to read the number and how to write the number. Okay, the question number 7 is given here. Write down the given number in digits. Okay, they give in a words form. We read the number and write down in digits. So I read the number and you just make sure you just identify which number in came and how we write down the number. Write down the number 232,751,683. सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर से जाएंगे, that is 232 million. 232 million. This group is there. Insert the comma. After that 751,000. 751,000. हमें सबको नंबर रीड करने आते हैं, तो वेरी सिंपल 751,000. So last part of the remaining in the last part is 683. 683. So I am writing here 683. It is so simple, students. Just write down the number and insert the comma and form the group of 3 numbers from the right side is there. Now the second number is 789,173,730 is there. So 789 million. 789 million. Insert the comma. We get the first group millions. 789 million 173,000. 173,000 is the second group is there, and the last one is 730. 730
and 30 is there. So this is the answer. Now the last question हम इस टॉपिक का लेंगे 355 million. 355 million. So millions, write down in millions column. Then after that 904,000. 904,000 is there. Insert the comma. The last part given there 460 is there. So at the last place no number is coming there because 60 is there. Here also 904,000. So here they not pronounce the word 924, 914. Say directly say 904,000. So that's why this page is empty. So yes, this is so simple. You solve remaining question in your notebook, students. I hope you like this lecture also. मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड डू द स्टडी.